third, and say fourth, fifth also, all these units are now related to the Indian financial system. So, in the first unit, at the micro level, we have studied what are the various investment avenues related or available to an investor, and how to measure the risk and return. What is time value of money? What is the role of financial management in an organization? So, we were talking everything at the micro level, say at the company level and at the individual level. Now, what we will be doing is we will be talking at the macro level. What exactly is a financial system? What is the role of financial markets, institutions, and services in the financial system? But before we start with the entire network of a financial system, let us understand that there are two types of units in any economy. One with surplus funds, and the other which are deficit or short of funds. So, if I talk about the surplus units, your household savings, households with their savings are surplus units. Even business organization have surplus funds with them. And deficit units, say government might also have surplus funds with it. And then these entities again become the deficit units at some level or the other. So when a business needs funds and it issues shares in the market, at that point of time it is a deficit unit. But your business investing funds in the share market, in the shares of another company, is a surplus unit. So the same entity at different points of time and in different cases might be a surplus or a deficit unit. So let us understand this concept graphically. So here you see the introduction to the financial system. Here we see that there are some surplus units, as I told you, households, government, foreigners, business firms, and then there are some deficit units which the same entities can be at a different point of time. Now, the flow of funds from the surplus to the deficit units takes place through a formal financial system. In this, you can see that through the financial markets, your stock market, your commodity market, your forex market, the funds are moving directly from the lenders to the borrowers. Okay, so if say I myself I am investing in the share market, that becomes a direct flow of funds. But when we take the help of financial intermediaries, like say for example, through some financial institution, by opening my demat account with a bank, I am moving the funds from the surplus to the deficit units, then that is an indirect mode of transferring of funds. So all this collectively makes up the financial system. How do we define a system? System is a sum total of parts which are related to each other. Okay. Now in system, the parts, they coordinate with each other to give the desired result. Financial system would be all the units, all the entities which combine together provide services to each other in such a manner that enables the smooth flow of funds from the surplus units to the deficit units. So you can have a look here. In the second point, it is mentioned a financial system comprises of a set of subsystems of financial institutions, markets, instruments, and services which help in the formation of capital. Now, in the economy at the macro level, we say that if we promote savings,
if these savings are then invested, this will lead to capital formation, which is actually an indicator of the growth of the economy. And then, if the economy grows, the purchasing power of the individual increases, the income increases, then it will again lead to further savings. So, it is a kind of circle, a kind of continuity which is formed, which will lead to ultimate growth of the economy. So, a financial system, a formal financial system, provides a mechanism by which savings are transformed into investments, and this is then helping in the economic growth of the country. Now, all these activities, all these subsystems are interrelated to each other. Financial system allocates, in the last point, financial system allocates savings efficiently in an economy to ultimate users, either for investment in real assets or consumption. So it is through the financial system that this circle of savings, investment, capital formation, growth is maintained, is ensured continuity. Okay. So this, I'll just quickly move through all these functions because these functions are common to financial markets also, to financial institutions also, and financial services also. So if we learn the functions of financial system here, these same points can be applied to all these three elements also. So first and foremost function of financial system is to encourage the habit of savings, and not only to encourage the habit of savings but to mobilize savings into investment. So if I save and I keep it in my Almira, then it is not leading to any capital formation. But if those savings are, say, simply put in a FD also, in a savings account in a bank also, at least that money is growing. So the objective is not only to encourage savings but also to mobilize them and convert them into investments. Second function of any financial system is to provide liquidity to the investment made. So now you have brought the investors to the market. What will serve them is the liquidity in their investment. तो हम यही बोलते हैं कि जो रियल एसेट्स होते हैं और जो फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं उनमें मेन डिफरेंस क्या होता है. फाइनेंशियल एसेट्स हैव मोर लिक्विडिटी एज कंपेयर टू द रियल एसेट्स, and hence financial assets can be converted more rapidly into cash as compared to the liquid assets. Then payment function. So with digitalization, everything, the government is also encouraging at every point to go for digital payments. So now through your apps, online medium of payment, debit card, credit card, UPI, Paytm, Beam app, all these are developments which are transforming the payment function from the traditional check system, cash payment system. We have moved to online payment of online payment system. Next is risk function. Now, the main financial service that caters to the risk function is insurance. Insurance, be it life insurance, be it non-life insurance, it is protecting the buyer or the insured from the uncertainties in the future. Okay, again, your pension schemes, your savings which are planned in such a manner to meet your needs
at different intervals of life. All these are covering the risk and future uncertainties. After that information function, now not only are the formal financial institutions giving you services, but they are also creating awareness. तो जो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन स्कीम होती है, या अगर आप म्यूचुअल फंड्स की एड्स देखते हो तो उसके बाद एक डिस्क्लेमर होता है दैट म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क. Please read the offer document carefully before investing. What is this? This is creation of awareness that such investment are prone to market risk. So this is creating and spreading information. Then transfer function. Transfer function is sitting in India at any end of the country. You can invest in real time basis. Also, not only within the country, I can also invest in shares which are listed on foreign stock exchanges. So there are different mediums for that. Have you people heard about ADR or GDR? Because now Indian companies, they can raise money not only from the Indian market but say from foreign markets through these instruments. ADR का full form किसी को पता है? Has anyone heard about this? Ma'am, American Depository Receipt. Yes, good. And GDR then stands for Global Depository Receipt. good. अब कोई guess करो या कुछ try to explain चिराग, अगर मीनिंग कुछ आइडिया है आपको एग्जैक्टली ये क्या होता है. Abhay, are you having any idea? Yes, ma'am. American Depository Receipt, ma'am. ADR जो अमेरिका मार्केट में हाँ, कोई नहीं, one of you speak, then the other can continue. Chirag, you were speaking. Speak. यस मैम. मैम ADR जो अमेरिका मार्केट में स्टॉक्स खरीदते हैं, सिक्योरिटीज. स्टॉक्स खरीदने से अच्छा. और GDR फिर क्या हुआ? नॉन अमेरिकन मार्केट के लिए हुआ. ओके अभय, अब आप बताओ. Ma'am, if an investor in India wants to invest in company that is based in America, so he can do so by investing in ADR, and rest of the world he can use GDR. ओके, वैसे आप ऑपोजिट बोल रहे हो. जो क्रक्स है, मीनिंग है, वो यही होता है कि अगर एक कंपनी अपनी होम कंट्री के बाहर पैसा रेस करना चाहे तो काफी रूट्स होते हैं. उसमें ये भी होता है कि अपने शेयर्स लिस्ट करवा लो बाहर के स्टॉक एक्सचेंज में. से फॉर एग्जांपल न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज या नैस्डैक पे कोई इंडियन कंपनी अपने शेयर्स लिस्ट करवा ले, पर उसमें रूल्स रेगुलेशंस फॉर्मेलिटीज बहुत ज़्यादा होती हैं. तो एक ईजियर रूट होता है इंडियन कंपनीज के लिए कि वो अपनी डिपॉजिटरी रिसीट्स लिस्ट करवा ले ऑन द स्टॉक एक्सचेंज. If an Indian company wants to raise money in the American market, it can go for issue of ADRs. And if it wants to raise money from, say, European markets or non-American markets, it can go for GDR, which is Global Depository Receipt. Now, these ADRs or GDRs are nothing but a bundle of shares clubbed together and issued by a bank, जिसको हम डिपॉजिटरी बोलते हैं, एन अमेरिकन बैंक. तो इंडियन जो कंपनी होती है, सिर्फ ये आपकी अवेयरनेस के लिए समझा रही हूँ, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है. इट्स ओनली फॉर योर जनरल अवेयरनेस दैट आई एम एक्सप्लेनिंग दिस. सो से एन इंडियन कंपनी लाइक Reliance, now it goes to an Indian bank, SBI, and it says that it wants to issue depository receipts in the New York Stock Exchange. Now SBI will approach
a US based बैंक से कोई भी हो सकता है, सिटी बैंक ले लेते हैं या कोई भी यूएस बेस्ड बैंक है, उसको अप्रोच करेगा जो अब हेल्प करेगा टू इशू द डिपॉजिटरी रिसीट्स टू द यूएस बेस्ड इन्वेस्टर। इसमें क्या होता है एग्जैक्टली कि रिलायंस इंडस्ट्रीज से अपने 100 शेयर्स एसबीआई को प्लेज कर देता है, एसबीआई को दे देता है कि इन 100 शेयर्स के अगेंस्ट आप यूएस मार्केट में डिपॉजिटरी रिसीट्स इशू करो। अब यूएस बैंक और एसबीआई एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं और यूएस बैंक बोलता है कि हम क्या करेंगे, 10-10 शेयर्स का एक एक लॉट बना देंगे। That is the ratio 10:1. 10 Indian shares of Reliance is equal to 1 depository receipt, 1 American depository receipt, and then these 10 ADRs will be issued to the American investor. Okay, so depending on their need, the US based investor will buy this. तो अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हो, इनडायरेक्ट रूट से अपने शेयर्स यूएस मार्केट में लिस्ट करवा रहे हो। इसका फायदा क्या होता है, इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि काफी जो फॉर्मेलिटीज होती हैं वो बच जाती हैं, पेपर वर्क बच जाता है। दो ऑब्वियसली फॉर इशूइंग एडीआर ऑल्सो you need permission from the domestic government and from the US based Security Exchange Commission. Now these shares or these depository receipts, unlike equity shares, they do not carry any voting rights. तो कंपनी शेयर्स तो इशू कर रही है पर कंपनी के डिसीजन मेकिंग में कोई इंटरफेरेंस नहीं हो रहा। दूसरी चीज, जब रिलायंस इंडियन मार्केट में डिविडेंड अनाउंस करती है, से प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, तो उसी प्रोपोर्शन में यूएस मार्केट में भी डिविडेंड्स अनाउंस होंगे, पर ये डिविडेंड्स कौन सी करेंसी में दिए जाएंगे, डॉलर में। तो उस दिन जो डॉलर रुपी एक्सचेंज रेट होगा उस रेट पर डिविडेंड पेमेंट होती है। This is how the ADR or for that sense GDR system works. और अगर किसी अमेरिकन कंपनी ने इंडिया में पैसा रेस करना है तो वो क्या इशू करेगी, वो IDR इशू करेगी, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट। तो ऑब्वियसली ADRs GDRs are more popular as compared to IDRs. Okay, I hope to some extent this concept is clear. If there are any questions in this, you can ask. No questions? मैम वोटिंग राइट्स के बारे में एक बार एक्सप्लेन कर दो। वोटिंग राइट्स जैसे इक्विटी शेयर्स अगर आपने इंडिया में इशू करे तो जिसने इक्विटी शेयर्स लिए वो उसके पास उसी प्रोपोर्शन में वोटिंग पावर आ जाती है, वोटिंग राइट्स आ जाती हैं। पर जो यूएस वाला इन्वेस्टर है उसको वोटिंग राइट्स नहीं मिलती है एडीआरस के थ्रू। वोटिंग कब होती है, वोटिंग होती है जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है कंपनी की, उसमें कोई भी रेजोल्यूशन अगर पास करना है तो आपके पास वोट्स होते हैं। वो वोट्स आपके जो नंबर ऑफ शेयर्स आपने खरीदे हुए कंपनी के उसके प्रोपोर्शन में होते हैं। तो जिसकी ज्यादा शेयर होल्डिंग है उसकी वोटिंग पावर भी ज्यादा है और वो ज्यादा इन्फ्लुएंस कर सकता है डिसीजन मेकिंग को। That is how voting rights work in equity shares. Any other question? Okay, so let's move to the other functions then. Reformatory function, your rules, regulations, acts like Company Act 56 से 2013 बना, they are also reformed, revised, updated as per the requirements of the market.
This all works under the formal financial system. And then other functions, you see not only the traditional functions being offered, but you are also offered portfolio management services, merchant banking service, investment banking जो हम बोलते हैं. All these new services are being offered under the formal financial system. Okay. Now, what is the role, importance of financial system in economic development? Same points आपके role of financial markets in economic development और role of financial institutions in economic development उसमें भी आ सकते हैं, and they are nothing but a repetition of the points we have discussed right now. It links the savers and investors, the surplus units and the deficit units. Help monitor corporate performance because performance of a share in the stock market is actually reflecting how well the company is performing. That is why जब कोई कंपनी अपना क्वार्टरली रिजल्ट या एनुअल रिजल्ट या सेमी एनुअल रिजल्ट रिलीज करती है, like yesterday Hindustan Unilever, they declared their results, so they reflect how the company is performing. Next, it helps in managing uncertainty and controlling risk, transfer of resources across geographical boundaries, portfolio adjustments facilities. Portfolio adjustment क्या हुआ? Portfolio is collection of securities or assets in which you are investing. तो पोर्टफोलियो आपने एक बारी बना लिया तो वो स्टैग्नेंट नहीं होता, आप उसको रिवाइज कर सकते हो, उसमें चेंजेस ला सकते हो. Also, a formal financial system will help in reduction of transaction cost and increasing the returns. जितना हमारा financial system expand होगा, उतना हमारा per unit cost of transaction will reduce. Helps in capital formation and process of financial deepening and broadening. Look, broadening means increasing the number of participants in the market, while deepening means increasing the value of transactions. So both are necessary for the development of economy. Not only bringing more and more players in the market, but also increasing the trade volume, trade value in the market. Ma'am, Yes, Vignesh. ma'am, but increase the number of people involved in transaction itself, the number of transactions increases, right? Yeah, the volume will increase through broadening. Deepening means the value will increase. So the Oh, okay. contribution to GDP, percentage of GDP will increase. Okay, ma'am. Okay. Okay, now we come to the Indian financial system. Roughly, what does it look like? This is a graphical presentation. So some of these elements we are covering in detail in the upcoming 4 units of your syllabus. Now, when I talk about the Indian financial system, it has an organized sector, it has an unorganized sector. ऑर्गेनाइज्ड आपके सामने है, जो रिकग्नाइज्ड है, जिसके लिए प्रॉपर रेगुलेटर हैं. और फाइनेंशियल सिस्टम के रेगुलेटर कौन कौन है? Who's regulating the Indian financial system? SEBI, RBI. Yes, very good. So main regulators are SEBI and RBI. तो इनके परव्यू में जो भी इंस्टीट्यूशंस आते हैं, जो भी सर्विसेज आती है, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, वो सब फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम का पार्ट है. बट जो लोकल मनी लेंडर्स होते हैं, चिट फंड कंपनीज होती हैं, ये सब आपका अनऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल सिस्टम है, इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम है. तभी जब यहाँ पर फ्रॉड होता है
तो आरबीआई या सेबी उसको रिजॉल्व नहीं कर सकती, फिर वो प्रॉपर क्रिमिनल केस बनता है और उसकी प्रोसीडिंग्स होती हैं. बट इफ एनीथिंग unwanted happens in this system, in the formal financial system, then you can approach SEBI और RBI. तो जो हम फ्रॉड्स की बात करते हैं, से नीरव मोदी का स्कैम हुआ या माल्या का स्कैम हुआ या फिर आपका सहारा स्कैम हुआ, all these have been under the formal financial system. So SEBI and RBI become the ultimate regulatory authorities there. Everything comes under their purview. Yes बैंक के साथ प्रॉब्लम हुई, तो जो भी स्टेप्स लेने हैं अब उसको रिजॉल्व करने के, मैनेजमेंट चेंज करनी है, वो सब आरबीआई कर रहा है. ओके, या सत्यम का स्कैम हुआ तब से भी आया एक्शन में. तो ऑल दिस इज देन रिजॉल्व्ड बाय बेसिकली मेनली दीज टू रेगुलेटर्स. ऑब्वियसली फिर हर स्पेसिफिक सेगमेंट का एक अलग रेगुलेटर होता है. इंश्योरेंस का रेगुलेटर कौन हुआ? इंश्योरेंस इंडस्ट्री का रेगुलेटर कौन है? LIC. No, Chirag, not LIC. LIC is one of the biggest companies in the life insurance sector. गवर्नमेंट एंटिटी ऑब्वियसली अब प्राइवेटाइज हो रही है, उसमें डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है, बट LIC इज नॉट द रेगुलेटर. एनीवन एल्स? Regulator for the insurance industry? Ma'am, I think that Insurance Act. एक्ट बेटा रूल हो गया. IRDAI is the Insurance Regulatory Development Authority of India. That is the regulator for insurance. उसी तरह म्यूचुअल फंड्स के लिए एक अलग रेगुलेटर है. एम्फी का नाम सुना है? यस, एम्फी, AMFI, Association of Mutual Funds of India. So that becomes a regulator for mutual funds. But ultimately, everything is under the umbrella of SEBI and RBI. तो आपके सिलेबस में भी SEBI और RBI का जो पूरा रेगुलेशन सिस्टम है, that is to be studied separately and very important from your exam point of view also. Okay, now start looking at the elements. Then I'll give you an overview जो इसका क्या मतलब होता है. Okay, let's start with the financial institutions. Under financial institutions, you have banking institutions and you have non-banking institutions. तो दो टर्म्स होती हैं, एक होता है बैंक्स और एक होता है, I'll just take out a blank page. So let's understand. First, we should know the difference between banks and NBFC. क्या फुल फॉर्म होता है NBFC का? No one has heard what an NBFC is. NBFC stands for non-banking financial companies. Okay, so banks में आप बोल रहे हो SBI, से PNB, Axis, HDFC and so on. NBFCs में आप बोल रहे हो IFCI या फिर आपका मुथूट फाइनेंस. These are your NBFCs. अच्छा, अब इसमें डिफरेंस क्या होता है? बैंक्स की जो बेसिक डेफिनेशन होती है, बैंक एज अ टर्म इन सिंपल
definition, simplest definition is that banks, they accept deposits and they give loans. ओके तो दो फंक्शंस होते हैं, बेसिक फंक्शंस होते हैं बैंक्स के, दैट दे एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एंड दे गिव आउट लोन्स, while for NBFCs only one function is valid, which is NBFCs, they give loans, they do not accept deposits. And that is why we say that banks, they create credit in the economy, while NBFCs do not create credit. क्रिएशन ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या होता है, मनी फ्लो इंक्रीज करने का मतलब क्या होता है, से 3 बैंक्स हैं, बैंक एक्स, बैंक वाई एंड बैंक जी, या अभी 2 ही ले लेते हैं, सिंपल रखते हैं। अब बैंक्स जब अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं, जैसे कंपनीज की बैलेंस शीट होती है, एक तरफ लायबिलिटी है, एक तरफ असेट है, लायबिलिटी एंड असेट। हाउ डू यू डिफाइन अ लायबिलिटी अकाउंट्स में, सिंपल अकाउंट्स में लायबिलिटी कैसे डिफाइन करते हैं, व्हाट इज अ लायबिलिटी? Amount which we have to owe to others. Okay, amount which we owe to others. And what are your assets? How do you define assets? Yes, Sunny. Ma'am, अभय चलो आप बताओ। things that we own. चिराग रिपीट करना बेटा डेफिनेशन। Things that Amount that we own. Okay, things of value that we own. Okay, which can then be used for further revenue generation also. Okay, so your plant, machinery, building, factory building, these all furniture, fixtures, these all are your assets. While liability is the amount that we owe to an outsider, जिसको हम creditor बोल सकते हैं। आप raw material ले आए without payment of cash, that raw material supplier becomes a creditor and is a liability for the business. Okay, now when I talk about banks, they also have some liabilities and they have assets. अब बैंक के लिए डिपॉजिट लायबिलिटी है या एसेट है? Think and tell. Liability for them. Very good. So the deposit made in a bank by the customer is actually a liability, while the loan given by the bank is an asset for the bank, because on the loan bank is earning interest. तो रेवेन्यू जो जनरेट हो रही है वो लोन से हो रही है, और जो पैसा हमारे पास बैंक के पास उधार है वो है कस्टमर डिपॉजिट। सो दे से कस्टमर वन goes to bank X and deposits ₹100. Okay, now this 100 जो डिपॉजिट है बैंक अपने पास नहीं रखता, बैंक इस डिपॉजिट को फर्दर यूज में लगा देता है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट आर द रेट्स इन द इकोनॉमी। जो बैंक्स को मेंटेन करना होता है वो CRR मेंटेन करना होता है, SLR मेंटेन करना होता है। CRR स्टैंड्स फॉर
All of you are commerce students. CRR stands for Cash Cash reserve reserve ratio. ratio. cash reserve ratio. SLR stands for statutory liquidity ratio. ratio. हाँ जी, ठीक है। अब ये सब मैं मीनिंग अभी बहुत डिटेल में नहीं जा रही। से फॉर एग्जांपल टोटल जो रिक्वायरमेंट है बैंक को 10 रुपए, बैंक से 10% रिक्वायरमेंट है रेट की, ठीक है। अभी सिंपल रखते हैं, जब आगे आपका बैंकिंग हम डिटेल में करेंगे देन आई विल एक्सप्लेन यू। सो विच मीन्स नाउ बैंक हैज टू कीप 10 रुपीज with itself and 90 rupees of this can be given as loan. ओके, तो जो पैसा आपके पास डिपॉजिट में आया है, आप उसी पैसे को ग्रो कर रहे हो बाय गिविंग इट एज लोन। यू गिव दिस लोन टू कस्टमर बी, कस्टमर 2, ठीक है। अब ये कस्टमर इस 90 रुपए में से 20 रुपए अपना प्रोडक्शन में लगाता है, बाकी 70 रुपए जाके बैंक वाई में डिपॉजिट कर देता है। This customer is taking a loan from bank X of 90 rupees, using some 20 rupees and investing, putting in deposit 70 rupees with bank Y. Now this cycle will keep on repeating. अब बैंक Y इसमें से 7 रुपए तो रेट रिक्वायरमेंट के लिए रख लेगा और बाकी 63 रुपीज लोन दे देगा से टू सम कस्टमर 3 and so on. So this flow of funds is creation of credit in the economy. This is creating money in the economy, enabling money flow. But NBFC, since it is not accepting deposit, it cannot create credit. This is the main difference between banking and non-banking financial companies. They can give loans, but they cannot create credit. Okay, I hope to some extent this difference is clear. What we'll do is that we'll stop here.